Today, 16th of January 2026. I shortlisted two stocks for trading today. The first one was Bank of Baroda, and the second one was Canara Bank. Right. Um, so Bank of Baroda में this, okay. um, Bank of Baroda, like I said earlier, it is in a positive trend, in an upward trend. तो आई वाज प्रीटी श्योर कि आज भी एक अपवर्ड ट्रेंड आएगा. व्हेन आई स्टिक टू लाइन चार्ट, this was the area. Just switch to 1 hour. Okay. This was the area for me. That was the resistance. I was expecting the resistance to break today. Okay. And it is also uh, head and shoulder pattern over there. So this is also a positive trend and bullish pattern. So it's going to break out today. I was pretty sure it will be a bullish day today. So what happened is, let's just to 5 minutes chart candles. We ended up in a loss. What happened is, okay, हमने डिसाइड किया था कि ये पॉइंट जो है, I don't know why I chose this point. Okay, this point over here, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के ये पॉइंट कहाँ से आया? ये पॉइंट आया था फ्रॉम दिस कैंडल, ठीक है, द वेरी सेम कैंडल जहाँ पे नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ था, ठीक है. तो 5 मिनट के चार्ट में दैट पॉइंट ओवर हियर, यहाँ से नेगेटिव सेंटिमेंट स्टार्ट हुआ. तो आई थॉट इसी पे अगर हम एक एक लाइन ड्रॉ करते हैं 309.45, तो 309.45 अगर ब्रेकआउट देता है देन आई विल गो बुलिश. तो आई एंटर्ड एट दिस पॉइंट, exactly at this point, and see this candle, blue marks over here, it went up. So it was making those higher highs and higher lows. Okay. From here, see, one more thing. Last video, I said कि before breaking out, there is a small consolidation in that area, right? What I think there is a small consolidation area. तो it was a positive break. उसके बाद एक retest आया on that same resistance on that very exact point, and retest होने के बाद it यहाँ से नीचे आया, it went up. Okay. Now I was thinking कि मार्केट और ऊपर जाएगा, but market started making a different move. यहाँ से वो एक नीचे आया, it was a higher low, then same point, it didn't make a higher high, and then it came down and made a new lower low. Yes, it was a lower low. Then it came here at this point, and then it broke this point. This resistance, this support that was being created for the day. See, it is clear. ये वाला जो closing है, that closing, you can see it clearly. ये highest point जो है closing का, और ये जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग, इट इज ऑफ नॉट द सेम हाई. मतलब जो लो, मतलब जो हाई क्रिएट होना चाहिए
for an uptrend, it should be higher than this high, but it is not higher than this high. For बोलते हैं इसको छोड़ दो ग्रीन कैंडल के हाई को क्लोज को पकड़ो क्यों अच्छा सी राइट ग्रीन चार्ज में भाई क्लोजिंग इज इम्पोर्टेंट ठीक है तो यहाँ से पकड़ो and that is what happened. This was lower than this was lower than this, and तो मुझे मतलब I should have figured it out कि market का sentiment change हो गया and I should have exited over here itself. See, there are a couple of more things like over here. ये green candle के ऊपर selling pressure है. इस candle पे कोई dip नहीं है. It is a clean candle. You can say it as a Marbuzo. Then this candle over here. Okay. So this candle is like a bearish engulfing pattern without any restrictions from the buyer at the bottom. So there were pretty strong indications that the market is going to come down. But I thought कि चलो लगा लिया है तो लगा लिया है, no problem. एंड ये जो हमने रेजिस्टेंस जो बना था ये रेजिस्टेंस कैसे बना था रेजिस्टेंस बना था फ्रॉम द हाई ऑफ दिस कैंडल to the low of this the double this was a double bottom. I can say this is a double top pattern. यहाँ पे break हुआ and it actually ran it actually plunged downwards pretty fast. It hardly took like 5 minutes. No, sorry, it hardly took like an hour to come from this point to this point. तो जो ट्रेड मेरा इस पॉइंट पे 1.75 आ रहा था वो ट्रेड मेरा 3.5 रुपए 3 रुपए 80 पैसे था तो यस इट वाज अ लॉस ओके नाउ द लर्निंग फ्रॉम दिस इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल never I should not have been expecting the stock to rally from like not rally but to go in an uptrend from this point to this point because it is a 3% move and it is very impractical to say a stock of 300 rupees is going to run every day will give you a 3% move every day. ये था impractical first point. Second, I should have observed those higher highs and higher lows. हायर हाइज एंड हायर लोज से ही पता लग जा रहा था थर्ड ये like this high was lower than this high was lower than this it already made a uh, low lower than this so ये पता लगा third the red candles are showing no rejections from the buyers at the bottom but तो उसमें प्रॉब्लम मतलब उसकी वजह से भी एंड ओके that is pretty much uh, yes what I learned today. And fourth, yes, I should enter only at the retest level. What I mean is मैं यहाँ पे ले गया entry. I shouldn't have taken entry over there. मुझे ये ऊपर गया and then यहाँ पे this point I should have taken the entry. Where actually tested the support. Okay. Okay. So the quantity that I traded was 40 and 3.8 अगर लगा दोगे तो roughly around कितना हो रहा है
good at maths. 40 into 3.8, 152, yeah, 150 का लॉस हुआ. I was expecting a profit of um, a good profit, but मिला क्या? Loss. चलो, कोई बात नहीं. The next stock that I was expecting, when I was going to trade was because I finished, when I utilized all my capital in Bank of Baroda, I couldn't take this trade. But if we can see, इसमें अच्छा मतलब it captured the profit. Okay, like how what happened is, let's switch to day chart. Same logic. बैंक ऑफ बड़ौदा भी माने एक बुलिश में था, बुलिश ट्रेंड में है. सी बुलिश ट्रेंड में है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. कनेरा बैंक भी एक बुलिश पॉइंट ट्रेंड में है. तो व्हाट आई assumed is कि if you switch to line chart of 1 hour, let's say 1 hour or 15 minutes take, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये 1 2 3, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है अगेन. ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न आर वेरी गुड बिकॉज एक ट्रेंड में ऐसे ऐसे आ रहा होगा लोअर, and then it will make the final low, and then it will start a upper upward movement. ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर, आई ट्रस्ट हेड एंड शोल्डर वेरी मच. और इसी हेड एंड शोल्डर के अंदर इफ यू कैन गेट डबल बॉटम, वो तो सोने पे सुहागा. इट गिव्स लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. ओके, तो अभी व्हाट हैपेंड है, ठीक है, तो 5 कैंडल में 5 मिनट चार्ट में व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि इस कैन मतलब इस पॉइंट का सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन दोनों में से why, if we say कि why did I choose this point, so I didn't take a trade in this, but my analysis was correct in this, so we'll just discuss this. Okay. Since I utilized all my capital in Bank of Baroda where I lost 150 bucks. तो why I chose this, because अगर मार्केट को वहां से नीचे आना ही है तो higher high it will like we saw in Bank of Baroda, वो वहां से एक नया लो बनाएगा. ठीक है, तो ये एक लो लोअर हाई बनाएगा. इस हाई के नीचे ये हाई, एंड देन इस हाई के नीचे हाई. तो सेम, तो अगर नीचे आना ही है तो लेट्स जस्ट टेक दिस वन. यहाँ तो जाएगा या नहीं किसको पता. मुझे तो लग रहा था नहीं जाएगा, बिकॉज ऊपर से सेलर्स के रिजेक्शन अच्छे दिख रहे हैं. ठीक है, तो ओके, तो मैंने इस पॉइंट का मतलब इस कैंडल का हाई लिया, उस जान के कैंडल का हाई लिया. इसको 5 मिनट पर, अभी 5 मिनट में एंट्री कैसे डिसाइड किया. एंट्री था कि दिस इज लाइक द कप एंड हैंडल वाला, आप बोल सकते हैं. दिस वाज द कप एंड दिस वाज द हैंडल, एंड लाइक आई सेड बिफोर, if when a support resistance is about to be broken, it will consolidate for a while with low volumes again. Now, see why then, अभी यहाँ ब्रेक करेगा तो यहीं पे नहीं घुसता. I would have entered at this point. Now, why I chose this point is because see यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे एक हायर
हायर लो दिख रहा है, लो हायर देन दिस पॉइंट, दिस लो इज हायर देन दिस पॉइंट, एंड सेम तो दिस point over here, this line over here, 154.90, I figured that the stock is respecting it too much, so I decided कि मैं एक पॉइंट पे लूंगा, यहाँ पे लिया, and it went, it broke in the first candle itself. It gave a 1.5 rupees 1% का move दे दिया इसने, ऊपर गया, it retested that line again, 154.90, and मैंने stop loss सेट किया था इसके नीचे, बट आई थिंक द बेटर मूव वुड हैव बीन कि इस कैंडल के नीचे, मतलब नॉट एग्जैक्टली नीचे, थोड़ा 5-10 पैसे का बफर रख के, द बेटर मूव हैड बीन दैट, बिकॉज ये 1 रुपी का मूव है, 1.5 रुपी का मूव है, तो अगर यहाँ से वो लॉस होता तो बहुत ज्यादा हो जाता। ठीक है, वहां से नीचे आया, ये एक शायद बुलिश पियर्सिंग बोलते हैं इसको, it it gave a bullish piercing pattern, and the stock actually hit our target, but I was unlucky कि I was not able to take this trade. Okay, so after what happened is, finally if अगर ये लिया होता तो this was like 150 bucks का, तो see, my capital was 3,300 rupees, and now it is down to 3,100. So I would have taken like 100 shares in this. How much? Yeah, 100 or 125 shares मैंने लिया होता अगर instead of taking Bank of Baroda, if I would have taken this stock, I would have actually like yes 100 stock लिया होता, and अगर हमें प्रॉफिट मिला होता 2.65 रुपीज का, अगर मैंने एंट्री इस दर पे इस रीटेस्ट में लिया होता, so yes, we would have been in a profit of 2.65. But like I said, I am in inverted commas, double inverted commas. I am not a SEBI registered analyst. I am a totally new trader. I have no idea what I am doing. I'm just learning and journaling. So thank you guys for watching. Uh, give your feedback. Thank you.